Welcome back class 7th. Today we will start new exercise 8.3. In this exercise we will use unitary method. Firstly we need to know what is the unitary method. So here see carefully. When the value or cost of a number of unit or article is given. Okay, in that condition firstly we will find out the value of one article. When we have find one article value of one article, then we will calculate the number of the articles, required articles, and this method is called unitary method. So here are two rules for that. Less number of article, less cost. Less number of articles, less cost. To get less we divide. यानी अगर हमें डिवाइड करना है, हमें लेस नंबर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, उस कंडीशन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. मोर नंबर ऑफ आर्टिकल कॉस्ट मोर, यानी ज़्यादा नंबर की आर्टिकल, ज़्यादा नंबर होंगे अगर आर्टिकल के तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है. तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दैट जब भी हम डिवाइड करते हैं तो नंबर हमारा स्मॉलर हो जाता है, लेसर हो जाता है. और व्हेन एवर वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद एनी नंबर इन दैट कंडीशन वो हमारा ग्रेटर हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, मोर हो जाता है. ओके, सो द कॉस्ट ऑफ 1 kg flour is 14. What is the cost of 7 kg of flour? यहाँ पे कह रहे हैं the cost of 1 kg is 14. In that condition, what is the cost of 7 kg flour? So we have just discussed that if more number of article cost more. So in that condition we will multiply. तो यहाँ पे हमारे पास 1 kg था ना, अब यहाँ 7 kg हो गया, तो ज़्यादा हो गया ना, मोर हो गया, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. सो द कॉस्ट ऑफ 1 kg flour is 14 rupees. द कॉस्ट ऑफ 7 kg flour is 14 multiply with 7 rupees. In that condition 14 sevens are 98. In that condition we can say that the cost of 7 kg flour is 98, and this is the answer. So here second question we are going to solve. The total wages of 30 labor were 3450 per day. What will be the total wages if 12 more labor were added to the team? So firstly we have to find out the wages of one labor per day. Okay, so for that I have written here the wages of 30 labor equal to that. In that condition the wages of one laborer equal to 3450 by 30. So here we know that 30 ones are 30, remaining 4 became 45, again 30 ones are 30, again what is remaining here, 15, 3 5s are 15, 30 5s are 150. So we can say that the wages of one labor is 115 per day. Now here question is saying that if 12 more labor were added to the team, अगर 12 और ऐड हो जाए then, so 30 तो ऑलरेडी हमारे पास थे and 12 और ऐड हुआ है. In that condition that will be 42 labor. Okay, 42 laborers. अब इस कंडीशन में जो पेमेंट जो भी वेजेस होगी वो क्या होगी, तो इस कंडीशन में जो वेजेस होगी, द वेजेस ऑफ 42 laborers and multiply 115. When we multiply this, so when we multiply these numbers we got this. So thus we can say that the wages of 42 laborers per day is 4830 rupees. Okay, and this will be the answer. Same as we will find out a machine take 5 hours in cutting 120 tools. How many tools will it cut in 20 hours? So firstly we need to find out the cutting in 1 hour. 1 hour में कितनी कटिंग होंगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्टली हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे 5 से. देन जब हमें 1 आवर की कटिंग के टूल्स मिल जाएंगे देन वी मल्टीप्लाई विद 20 आवर एंड वी गॉट द आंसर. सेम एज वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 44, 5, 6 and 8.
and send me pic of your homework. Thank you.